हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 71। इसमें हमें शॉर्ट हैंड का एक पैसेज दिया है जिसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। इसको मैं धीरे धीरे रीड करूंगी सो दैट आप भी मेरे साथ साथ इसको रीड कर पाएं, आउटलाइंस को अच्छे से समझ पाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टू सिक्योर द बेस्ट फ्रॉम हिमसेल्फ एंड to give right service to others, both the clerical worker and the manual laborer must have fresh air and healthy rooms to live in. Bright, airy rooms into which the sun's rays may pour and the breezes blow when desirable. Dark rooms retain germs of disease and either reduce the worker's life or weaken his physical strength so as to make me unable to do severe work either of brain or muscle. A robust man may carry on for a time in dark rooms, but eventually such places must cause injury to him and bring on loss of force and energy. He will arise in the early morn, dull and weary from the outset, in place of rising merry and bright and ready for anything in the day's work. In our opinion, the brighter the rooms we live and work in, the better our work is likely to be. फुल स्टॉप। ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।